children, today let's start with chapter number 3, that is mineral resources. What are minerals? They are natural occurring substances found in the earth uppermost layer. इसको हम क्रस्ट कहते हैं. इसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है. It has one or more element and these elements come together through natural process without any human intervention. इसमें किसी भी तरीके का कोई human intervention नहीं होता. So let's study about the characteristics of minerals. So we have some key characteristics. What are these? First is localized nature. Nature कैसा होता है? Localized होता है. Organic और inorganic होते हैं, ores होते हैं और depth of formation. So if we talk about localized nature, मतलब minerals होते हैं वो typically कहाँ found होते हैं? In the specific region, right? They are found in the specific region, right? Organic means they are categorized into category organic and inorganic. Organic mineral में आपके coal, petroleum और natural gas आ जाते हैं और inorganic में आपके iron, copper and manganese. Ores में they are found with rocks, often in the form of ores. Right, we have depth of formation. They are situated in the earth crust, but some such as petroleum and natural gas they form at much greater depth. Now, classification of minerals. Mineral accepts variation in their physical and chemical properties. First is metallic content. इसमें आपके metallic mineral होते हैं, like we have iron, coal, copper, gold, silver, lead, aluminium, and tin. Extracting these metals often involves separating them from metals within ores. हम क्या करते हैं? मेटल्स को within ores सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक. क्या होता है? जिसमें आपके मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं होती. दे फॉल इन द कैटेगरीज. देयर इज अ लैक ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टी लाइक नाइट्रेट, पोटाश, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सल्फर, सैंडस्टोन एंड जिप्सम. एनर्जी मिनरल्स क्या होते हैं? दे आर डिस्पाइट बीइंग इनऑर्गेनिक ऑरिजिनेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम हो गया. नेक्स्ट इज योर बेस्ड ऑन आयरन कंटेंट वी हैव फेरस मिनरल, नॉन फेरस एंड प्रीशियस मिनरल. फेरस मिनरल जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है, ठीक है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में मिलते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड मैग्नीज. नॉन फेरस क्या होता है? जिसमें जो लैकिंग मतलब लैक ऑफ आयरन कंटेंट होता है, लाइक कॉपर, टिन, बॉक्साइट. दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल. नाउ वी हैव प्रीशियस मिनरल. वी हैव लाइक जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड अदर. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल. हम मिनरल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? देयर इज अ प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं, राइट? So we can say that mineral near the surface are often obtained through quarrying, while open cast mining is used for shallow deposit. It is significant depths है, shaft mining is employed here. Next is distribution of mineral. Mineral are distributed across different types of rocks. Metallic mineral are found in igneous and metamorphic rock. यहाँ पे आपको cracks, gravics और faults देखने को मिलेंगे, right? Examples: iron ore in North Sweden and copper and nickel deposit in Ontario and Canada. Sedimentary rock, they are non-metallic mineral. ये आपको prevalent ज़्यादातर आपको दिखेंगे, मतलब deposition और accumulation की वजह से बनते हैं, right? Now distribution of mineral. If we talk about Asia, it is the largest continent on the earth. यहाँ पे 2 mineral rich nation है, China and India. China takes the world largest producer है और India second, fifth है production. India क्या है? 5th है. यहाँ पे आपको लीड, टंगस्टन, एंटीमनी प्रोडक्शन मिलेगा. 5th लार्ज प्रोड्यूसर है बॉक्साइट, व्हाइल इंडिया होल्ड्स 7th स्पॉट इन बॉक्साइट प्रोडक्शन. एशिया को हम कलेक्टिवली कंट्री जो है वो हाफ ऑफ द ग्लोबल टिन प्रोडक्शन करती है विद इंडोनेशिया, चाइना एंड मेघालय. नेक्स्ट इज यूरोप. स्टैंड्स एज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द ग्लोबल मिनरल लैंडस्केप. रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, राइट? So if we talk about Eastern Europe and European Russia, they are abundant in lead, zinc, manganese, nickel and copper, right? नेक्स्ट इज योर नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टेड 3 प्राइमरी रीजन मिलेंगे: कैनाडियन, ग्रेट लेक, एप्लेशियन और कॉर्डिलेरा. ये माउंटेन रेंज है. वेस्ट में इट इज अ सील्ड वेयर यू फाइंड आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट वेस्टर्न, आपका जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है वहाँ पे आपको कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर मिलेगा. यूनाइटेड स्टेट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग है और उसके बाद कनाडा आ जाता है, राइट? नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. ब्राजील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है. चिली एंड पेरू एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कॉपर प्रोडक्शन में. बोलिविया जो है वो ज्वाइन करता है रैंक द वर्ल्ड लार्जेस्ट इन. कॉन्टिनेंट बोस्ट रिच रिजर्व ऑफ सिल्वर, गोल्ड, जिंक, क्रोमियम, बॉक्साइट, मिका, प्लैटिनम एंड एस्बेस्टोस एंड डायमंड. इफ वी टॉक अबाउट अफ्रीका, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट lucrative deposit, right? ऑस्ट्रेलिया कमांड्स प्रोमिनेंट पोजीशन इन ग्लोबल मिनरल्स. ये यहाँ पे जो 2/5 ऑफ ग्लोबल रिजर्व है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोर्टर है आयरन ओर का आफ्टर ब्राजील एंड एशिया.
राइट। देन कूलगार्डी एरिया जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे आपको क्या मिलेगा, गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिलेगा। एंटार्क्टिका, ऑल्दो माइन डिपॉजिट इन एंटार्क्टिका रिमेन एक्सप्लोर्ड, एक जियोलॉजिकल, यहाँ पे माउंटेन्स एंड आयरन डिपॉजिट इन प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका। यहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड, ऑयल, सिल्वर एंड iron ore might be present. Distribution in India. So if we talk about iron, India takes the mentor as the world largest exporter of iron, right? Shipping 2/3 of the production, Japan, Korea and Myanmar. की आपके जो आयरन ओर है वो डिपॉजिट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. If we talk about bauxite, it is the principal ore of aluminium production, finds more than the half of its reserve in Odisha and fifth in Andhra Pradesh. Mica, India leads world both in mica production and exports. Copper found in the pocket of India. आपको खेतरी या फिर डारिबा जो राजस्थान का है वहां देखने को. मैग्नीज, इंडिया सेकंड ग्लोबली क्या करता है, यहाँ पे वो रिजर्व मिलते हैं किसके साथ, जिम्बाब्वे. अराउंड 5th ऑफ द वर्ल्ड मैग्नीज रिजर्व इज फाउंड इन इंडियन वर्ल्ड. उड़ीसा इमर्ज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और उसके बाद आपको डिपॉजिट महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक यहाँ भी देखने को मिलता है. गोल्ड की अगर हम बात करें, कोलर और हाकिम कर्नाटका. Then we have limestone. It is refined in Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, and Andhra Pradesh. Salt की बात करें, it is a source such as sea, rock, and lakes. India stands as one of the world leading salt producer और exporter. चिलिका लेक जो आपका उड़ीसा में, वो आपका लार्जेस्ट क्या है, सॉल्ट वाटर लेक. Now uses of mineral. मिनरल क्या है, इंडिस्पेंसिबल है टू वेरियस इंडस्ट्री. कॉपर प्लेज अ वाइटल रोल इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, कॉइन्स एंड पाइप्स. एल्यूमिनियम सोर्स्ड फ्रॉम बॉक्साइट फाइंड एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, किचनवेयर एंड मोर. So we can say steel production, bleaching powder, insecticides and paints, limestones meanwhile serve as a fundamental role material in the cement industry. Now conservation of minerals. Mineral essential component है अर्थ का. They are the finite and non-renewable resource and they form over millions of years and they are depleting them rapidly. To ensure the availability of future generation, we must employ prudent and sustainable practice in extraction and their use. So for instance, using plastic instead of glass for container reduce the demand of silica. Mineral used in glass production, developing technology that minimize waste during mining and mineral processing. Next is energy resources. It is the foundation of the modern world, categorized as renewable and non-renewable. If we talk about on the basis of renewability, we have renewable resource and non-renewable resource. Renewable resources are the resources that naturally replenish relatively short period of time, like solar energy हो गई, आपकी hydro energy हो गई. Non-renewable resources क्या है, we cannot naturally replenish within the human time scale. Now patterns of use. We have conventional and non-conventional. आपकी conventional में दोनों आ जाते हैं, renewable भी और non-renewable भी, right? Both renewable like hydropower, non-renewable like coal and natural. Non-conventional जिसमें आपका wind, tidal, solar, thermo, bio, atomic energy सब कुछ आता है. Now conventional and conventional energy resources. We have firewood and dung cake, fossil fuel. In many rural areas, firewood and dung cakes have a vital energy source for cooking and heating. Like using dung for energy depletes what? Valuable agricultural resource. Fossil fuel such as coal, it holds a prominent place in the energy landscape, which is widely used in industries and power generation. Right? This is firewood. इसके advantage और disadvantage. Advantage का easy access है, collecting in time consuming. Coal की अगर हम बात करें, extensively available और ये polluting source है, right? ये ग्रेट एनर्जी जनरेट करता है, पॉल्यूशन करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन. इफ वी टॉक अबाउट कोल, ये एफिशिएंट है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस बी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट. देन वी हैव पेट्रोलियम व्हिच इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रॉक एंड ऑयल. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक स्ट्रेटा थ्रू ड्रिलिंग. और जो क्रूड पेट्रोलियम होता है वो रिफाइंड होता है इनटू प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल एंड लुब्रिकेंट्स. लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया, इराक एंड यूएई, with reserves also in North and South America, Europe, Asia and Africa. Natural gas accompanies petroleum deposit and is released during oil extraction. It holds the large natural gas reserve globally. Right? Let's talk about the oil or natural gas. Advantages क्या है इसकी? Easy transportation, basis of petrochemical. Disadvantages,
क्या है, ऑयल स्पिलेज लीड्स टू डिप्लीटेशन, कॉजेज ऑफ एसिड। और नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या है, इजी ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनर देन ऑयल एंड चीपर देन ऑयल। नाउ हाइडल पावर, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी कहते हैं। इट इज जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ वाटर। जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है, जब वो टरबाइन ब्लेड्स के साथ रन करता है तो एक बेस ऑफ डैम में क्या बनाता है, जो रोटेटिंग ब्लेड्स होता है वो जनरेटर को एक्टिवेट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। It has several advantages like unlike thermal power, hydel power does not emit harmful pollutants. It promotes irrigation and benefit fishing industry. It is renewable source because it relies on किस पे rely करता है, natural movement of water. While setting up a hydro power plant, वो expensive तो होता है लेकिन long term operational cost जो होती है वो कम होती है, right? So let's see where are the hydro station find Bhakra Nagar Dam, Nagar Arjun Sagar, Gandhi Sagar और Damodar. In recent years, large dams built for hydropower generation has faced opposition due to issues like displacement of local communities. Right? What are the thermal power? It is non-renewable resource generated by heat, fossil fuel causes air pollution और expensive होता है. वही हम हाइडल पावर की बात करें, रिन्यूएबल है, राइट, फोर्स ऑफ रनिंग वाटर से जनरेट होती है, पॉल्यूशन फ्री है और इकोनॉमिकल है, राइट. नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज, वी हैव न्यूक्लियर पावर. Nuclear power is derived from uranium and thorium. While it produces substantial amount of energy, it accounts for only about 5% of global energy production. So the nuclear power है वो expensive and has drawback of generating radioactive waste, जो क्या poses करता है, health risk to human. Major global producer USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया. और जो इंडिया है वो सिग्निफिकेंट है आपका यूरेनियम डिपॉजिट में, जो आपको राजस्थान और झारखंड में मिलता है. थोरियम के डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं आपको, मोनेटाइज सेंट्स ऑफ केरला, राइट. देन वी हैव सोलर एनर्जी विच इज हार्नेस्ड बाय कैप्चरिंग हीट एमिटेड बाय द सन यूजिंग सोलर फोटोवोल्टिक सेल. इनको हम यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पस एंड लाइटनिंग पर्पस बोथ, राइट, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरिया. इंडिया बोर्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट, जो कहाँ है आपका, भुज, गुजरात में. विंड एंड एनर्जी जनरेटेड थ्रू विंड विल, वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को विद हाई स्पीड विंड उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ये आपको कोस्टल एरिया, माउंटेन पासेस के पास देखने को ज़्यादा मिलती है. वी हैव एडवांटेजेस बिकॉज इट इज नॉन पॉल्यूटिंग, सेफ है, क्लीन है और कोस्ट इफेक्टिव. बायोगैस, इट इज energy is produced by converting organic waste material like dead plant, cattle dung, human waste into fuel for cooking and lighting. In rural India, facilities using cattle dung are common now. Gobar gas plants providing both energy and improved quality of manure. Tidal energy generated by harnessing alternative use of fall of sea water, right? जैसे आपके floodgate dams हुए, which is constructed across the sea inlets. Countries like Russia, France and the Gulf of Kutch of India, यहाँ पे आपको significant tidal energy potential देखने को. Geothermal, ये अर्थ इंटीरियर हीट है which the source taps into heat found on the earth, right? Steam produced is used to power turbine and generate electricity. इसमें आपके फिलीपींस, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, रशिया, इटली. इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरम, हिमाचल प्रदेश एंड पूर्गा वैली, जो कहाँ है आपकी, लद्दाख में, राइट. This is all in this chapter. Hope you understood about the mineral resources. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.